Yeah. Yeah. Started. Yeah. Okay. So last we connected, we talked about how we get projects, right? How a consulting firm get projects, and then we also talk about different systems we have. So that's what we saw. So today we are going to see what are some of the important SAP portals which are available, which we have to use during implementation or support projects. Okay. Okay. We are going to talk about SAP portals. Okay. So the first important portal which we use and which have most significance is your help.sap.com. And you can access this portal certified, then only you can access help portal now. So help.sap.com is accessible by everyone. It's just that if you then you might not be able to access full content of this portal. So your access would be limited. But again, you can access help.sap.com. Now, what are the benefits of this portal is? So if you remember, we talked about that SAP releases their updates twice a year, which are called half-yearly releases, Yes. right? So what happens in this half-yearly releases is basically for every module, there are some sort of improvements. There are some new features, some previous issues which SAP resolves and then release in form of half-yearly release. So it's kind of a if I compare this with the Windows, तो आपने देखा होगा कि Windows system में there are some regular updates which happens, right? Yeah. So similar concept is with SuccessFactor as well. So SuccessFactor is also doing a continuous improvement on their side so that their product is robust. So for that, they release these improvements continuously in form of half-yearly release. Now, being a certified consultants, we have to give this half-yearly exam again and again in order to keep our certification current. And if we miss any of these half-yearly exams, our certification is expired. So as a certified consultant, we have to give these exams. Now, We have to give once the these exam. updates get released, yeah, Sorry, Mohit. So we have to give the exam for every 6 months. yeah. So I will come to that. So for that, there is a separate portal. We'll talk about certification again. Okay. So so that is why this help portal is very important because the documentation of these half-yearly release, because we are consultant, right? So being a consultant, we should we should be upskilling ourselves as well. I mean, we should be aware about the changes which are coming in. So उसके लिए जो documentation है that is available on help portal. Help. ठीक है? Apart from this, whenever we do an implementation project, so there is a guide which SAP has released, and it has all the things, all the configuration points which are required to do implementation. So होता क्या है, if we do some new configuration and we are not sure on how to configure this particular feature, so आज भी what we do is we go to help.sap.com and we download this implementation guide, and then we follow the steps which are provided by SAP to do the configuration. And this implementation guide is only available on help.sap.com. That is why this portal is important. Okay. So now let's go into system and I'll show you this help.sap.com. So this is our help portal, SAP help portal. Now let's say you want to search a implementation guide for Employee Central. What we can do is we can just type here Employee Central.
And then you will see this option, implementing employee central core. And then it directly takes us to that document. So this is the document which is used, documentation for implementing employee central. And these are the configuration points which are available. Okay. And this can be downloaded as well in form of PDF. So it's a big document. I mean, I guess it's around 400 to 500 pages, but it has all the points with regards to employee central and then integration. So even the documentation, theoretical, everything is available in this. Do I need to read all these documents? No, you don't have to. So I will provide you the SAP standard content that is enough. But Okay. let's say, if you are doing an implementation project and your client wants any specific documentation or any specific configuration to be done, then in that case, you might have to refer this. Okay. At initial stage, you don't have to. Yeah. So this is the use of help.sap.com. Now let's move to another portal, which is called Partner Edge. SAP Partner Edge, basically. So this SAP Partner Edge is a portal. Now, what is the use of this portal is? So if you remember last time we discussed, we talked about that client will provide us the requirements, right? Mm-hmm. And in order to store those requirements, we use a document which is called configuration workbook. Now, configuration workbooks is a document in SuccessFactors which is used to store the requirements, and it's an Excel document basically, which will capture all the requirements. But initially, let's say we are doing an implementation project and we need to gather the requirements from client. So what SAP has done, SAP has already created a template for us, a ready-to-use template, which we can download from Partner Edge and use as part of our requirement gathering sessions. Okay, so that template can be downloaded from SAP Partner Edge. That's why SAP Partner Edge is used. So if you want to download it, what we have to do is you have to go to SAP Partner Edge portal. This is the portal. You have to log in here. Now, in order to log in, there might be an ID required. Okay, and if you don't have ID, you will not be able to log in on Partner Edge portal. Now, the ID which is used to log in on Partner Edge portal is called SAP ID or S user ID. So who will provide this ID? Right. So this ID is provided by your consulting firm in which you are going to work. So let's suppose if you are working in TCS, then TCS SAP team will create a SAP SID for you, and that will have access to log in into SuccessFactors or Partner Edge portal. So basically, consulting firms create this SID for you, and then only you can access Partner Edge. This ID is also used in other purpose as well. For giving half-yearly exams, this ID will be used. Okay. So we can use this ID for help SAP support and as well as success. Every portal of SAP, every portal of SAP. Okay. So that's the importance of this SID. Now, I have my company SID, so I will just use that. And we can log in with SID and then by email ID as well. Both the options are available. Yeah. So this is the Partner Edge portal. Now let's say if we want to search configuration workbook. So I can type here employee central
Configuration workbook. And scroll down. So we'll see this configuration workbook employee center. Click on this, and this will take us to a page where we have all the configuration workbooks which are used in employee center. So basically, we don't use only one configuration workbook. For different type of configuration, there will be different configuration workbooks. So in EC, we use 4 configuration workbooks. One is your foundation object. Then we have this employee data, then HR transactions and position management. Benefits is used in different module, which is EC benefits. That's why it is available here. But these 4 will be used in our employee central core. Okay. Now let's say the configuration group. I can just simply click on this and it will download an Excel file in our system. And let's open and see what information does that show. So meanwhile it downloads, I'll just open our SuccessFactors system. This is our SuccessFactors system. Let's say I want to search any employee profile here. I can just enter their name and this will take us to their profile. Full profile. So what happens during requirement gathering session here that we show a demo system to client, right? उनको पूरा demo दिखाते हैं and then these fields, sections, everything will be shown to them. And meanwhile, we are demoing this system, they will provide us requirement. Okay, there could be requirement that they want this attachment field or state of submit field here. Okay, so what we do at the time of workshop, we gather these requirements in our configuration workbook, and once configuration workbook is finalized, then only we do this configuration in system. Okay. So let's open that configuration workbook. So this is how configuration workbooks look like. You will see there are different type of sheets available. Document control, table of content, it's the initial sheets, but then we have biographical. CSF biographical is country specific biographical, personal info, country specific personal info, then CSF country specific dependents, nationality. So you see we have different types of sheets available. In these sheets, we capture the requirement. Okay. So for example, we have a sheet by the name of biographical info, which is your biographical information section basically. Now here you see there are fields like this. Person ID is a field. Date of birth is a field. Country, region of birth is a field. Now if I go into SuccessFactors system, and then if I go to biographical information section, you will see same fields has been configured. Person ID, date of birth, country of birth, and that's how it is configured. Now, if there is any custom requirement from client, what we need to do is we need to capture those requirements here. So if I scroll down, here we can simply add a row, and then here we can, let's say, the label of field. The label is basically which is displayed to users, right? The label of the field should be, let's say, medical insurance issue date, something like this. That's how we capture the requirements in configuration workbook. And once this is finalized, then we are going to configure this in our system. That is the importance of configuration workbook. Clear? Any question on configuration workbook? Yes, Mohit. So you mentioned that we have to gather the requirement in this workbook, right? Right. So, and you also said that
client will give their requirement in their workbook. In this, I mean, what client will do is when we show this system to them, at that point only they can provide their requirements. They will say that for capturing the biographical information, they would want some more fields. So the name of those fields we will capture in this workbook, and later on we will configure this in our system. Okay, so whatever requirement will be from client side, we have to note down here. Exactly. Yeah. We Okay. can do rough draft. ऐसा नहीं कि मतलब जो उन्होंने बोला वो मतलब exactly वही type करना है आपको. You can just do a rough draft and then later on we can align that in our configuration workbook. ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं तुरंत we can type that fast. No. So we'll draft it rough and then later on we finalize those in configuration workbook. वो ऐसे और ये जब workbook वो ऐसा वर्कबुक प्रोवाइड नहीं करेंगे जिसमें ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन हो कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे. नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है ना. तो आप इस तरीके से सोचो कि क्लाइंट है, उसने सक्सेस फैक्टर थोड़ा पहली बार परचेज किया है, इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका, राइट. एट दैट टाइम इस कॉन्फ़िगरेशन वर्कबुक में तो केवल स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं जो सक्सेस फैक्टर की ऑलरेडी डिलीवर्ड फील्ड्स हैं. ठीक है, ये जो आपको ऑलरेडी जो एंट्री दिख रही है, दीज आर स्टैंडर्ड फील्ड्स जो बनी बनाई मिलेंगे. बट क्लाइंट के अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अपने कस्टम प्रोसेस रहते हैं, राइट. तो वो जब हमें बताएगा तभी तो हम उसको नोट करेंगे. सो इसीलिए वी हैव टू डू दोस वर्कशॉप्स. ओके. ठीक है, इसीलिए वी हैव 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की देयर आर वर्कशॉप्स जिसमें पूरे दिन वी विल सिट टुगेदर विद क्लाइंट, शो देम द सिस्टम, गैदर द रिक्वायरमेंट्स विद देम. रफ में पहले हम लोग उसको ड्राफ्ट करते हैं एंड देन विल फाइनलाइज इन दिस कॉन्फ़िगरेशन वर्कबुक. The only source of our requirements is this document. ठीक है, अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग रेफर करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग रेफर नहीं करते. ओके. ठीक है. And once all the configurations, all the requirements are given to us by client ने हमको सारी रिक्वायरमेंट दे दी, we send this workbook to them और उनसे बोलते हैं कि एक बार और रिव्यू कर लो आप. ठीक है, these requirements just review. अगर और कुछ ऐड करना है लेट अस नो, कोई चेंजेस है लेट अस नो. बिकॉज अगर एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन वर्कबुक फाइनल हो गई देन हम इसको दोबारा से एडिट नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं. अगर कोई मेजर चेंज है तो उसको नहीं करेंगे. छोटे बहुत चेंजेस है वी कैन डू. छोटे बहुत चेंजेस लाइक कि भाई ये फील्ड को रिक्वायर्ड बना दो, मैंडेटरी बना दो, तो ठीक है, वी कैन चेंज दिस टू यस हियर एंड देन सेम वी कैन कॉन्फ़िगर इन आवर सिस्टम. And whatever fields we are seeing here, these fields are already available in SuccessFactors, right? Yeah, these fields are already configured in our system. तो इसमें भी अगर उनको कुछ चेंज कराना है, सपोज वो चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी हो, तो यहाँ पे वी कैन चेंज दिस टू मैंडेटरी. वर्कबुक में हम इसको ऐसे सेव कर लेंगे. बाद में एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी विल सी दिस, वी विल डू द रिस्पेक्टिव चेंजेस इन सिस्टम. Okay, got it. मतलब ऐसा नहीं मिलेगा सिस्टम बिल्कुल कोरा कि कुछ भी फील नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा. कुछ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जरूर मिलेगी. कस्टमाइजेशन के ही वी चार्ज. Okay. So that's how configuration workbook looks like, and we can only get this from Partner Edge. Now let's talk about third portal, which is our support.sap.com. This portal is also very important. इसका क्या यूज है देखते हैं. I go to support.sap.com. So होता क्या है, while doing configurations, सपोज मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और मुझको कुछ एरर आ रहा है व्हाइल डूइंग कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और बहुत कॉमन है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और एकदम परफेक्ट आप उसको बिल्ड कर दो, नहीं. देयर माइट बी सर्टेन इश्यूज बिकॉज ये सक्सेस फैक्टर का प्रोडक्ट जो है इसकी कोडिंग का एक्सेस किसी को नहीं है. मतलब इसके जो बैकएंड में जो कोडिंग है उसका एक्सेस केवल एसएपी के ही पास है. वी डोंट हैव दैट एक्सेस. वी कैन ओनली डू कस्टमाइजेशन विद इन द सक्सेस फैक्टर बाउंड्रीज. सक्सेस फैक्टर ने जो हमें ऑप्शन दिए हैं कस्टमाइजेशन के लिए, केवल हम उन्हीं को यूज कर सकते हैं.
ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। नाउ व्हाइल डूइंग सम कॉन्फ़िगरेशन आई एम गेटिंग सम एरर, ठीक है। या फिर एग्जांपल, सपोज मैं किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू हायर समवन, द एक्शन व्हिच वी यूज इज ऐड न्यू एम्प्लॉय। ये भी हम लोग अभी देखेंगे कैसे सिस्टम में किसी को हायर करते हैं। सो व्हाइल हायरिंग आई एम फेसिंग एन एरर, मुझको कुछ एरर आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज, उस एरर के बारे में आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू सर्च a solution for that error, we have a portal which is support.sap.com. यहाँ पे आके I have to log in and search that error. So एक बार log in करते हैं and then let's search that error. Let's say error in add new employee. Simple, जैसे हम लोग गूगल पे एरर सर्च करते हैं उसी तरीके से and this portal we can come and search error. तो इस पोर्टल में क्या है कि this portal have a repository of documents जिनको हम बोलते हैं KBA, knowledge based artifacts, ठीक है। those knowledge based artifacts have solution to different types of errors। तो एसएपी ने अपनी ही एक रिपोजिटरी बना रखी है फॉर सोल्यूशन, ठीक है। Okay. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये एरर डाला तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ राइट साइड में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि एरर ये वाला एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, and नीचे भी एक ये दिखा रहा है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आई विल चेक, और मुझे लगता है कि मेरा जो एरर है वो कुछ इससे मिलता जुलता है। So what I'll do, I will click on this and it will open a document which will have a cause of this issue and solution for this issue, कि ये solution क्या होगा, इसको कैसे fix किया जाएगा। So you see this is how the document look like, इसको KBA बोलते हैं। And then scroll down, it will have the reproducing, how do you reproduce this issue, क्या क्या steps follow करके आपको issue आ रहा है, इसका cause क्या है, इसका cause है wrong configuration, ठीक है। इसको रिजॉल्व कैसे करना है वो स्टेप्स तक हमें दे रखे हैं इसमें, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फॉलो द रेजोल्यूशन स्टेप्स, और अगर इसे फॉलो करके हमारा इशू फिक्स होता है, मतलब भी फिक्स्ड। सो इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे ने रिलीज कर रखे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स केवल आपको सपोर्ट पोर्टल से मिलेंगे। सपोर्ट पोर्टल का दूसरा नाम ये भी है me.sap.com, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप support.sap.com डालोगे तो वो आपको me.com पे लेके आ जाता है, ठीक है। ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ है पोर्टल का नाम, बट दोनों सेम ही पोर्टल, ठीक है। नाउ लेट्स से So, एरर आ रहा है, मैंने डॉक्यूमेंट, या yeah, I was saying, so everyone can log in on this, or for that also we need certification and नो, ID. फॉर दैट आल्सो यू नीड द एसआईडी। इसके So, फुल एक्सेस के लिए यू नीड द एसआईडी। suppose if I am not certified and I'm still working, then how I will get all these documents? So I need to contact someone who is certified and who is working on backend, something like that. बेसिकली अगर आपके पास एसआईडी नहीं है, देन समवन फ्रॉम योर टीम, टीम लीड वगैरह, दे कैन शेयर दोज एसआईडीज विद यू। तो वो क्या है, उस एसआईडी के क्रेडेंशियल आपके साथ शेयर कर देते हैं, सो दैट यू कैन लॉग इन एंड डू ऑल द वर्क। Okay. तो उससे आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा, Hmm. Got it. मतलब शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल टू शेयर, आईडी कैन बी शेयर्ड, Okay. ठीक है। नाउ Hmm. मुझे एरर आया, आई हैव सर्च दैट एरर इन दिस पोर्टल, और मुझे डॉक्यूमेंट मिला, आई हैव फॉलोड द रेजोल्यूशन। अगर फिक्स हो जाता है तो ठीक, लेकिन अगर फिक्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इन दैट केस वी कैन क्रिएट अ टिकट फॉर एसएपी, ठीक है, क्योंकि एसएपी का प्रोडक्ट है, राइट। अगर कुछ टू फिक्स दैट एरर, so for that we can create a ticket to SAP directly, SAP support team directly। उसके लिए what we need to do is we have to go to this get assistance, and then यहाँ पे we can go to support team, yeah, get support,
and then report new issue. So basically we can report issue to SAP as well from this portal, और इसी portal से आप report कर सकते होगे, और जो भी ticket आप raise करते हो, those ticket status can be checked from here. ठीक है? So यहाँ से what we need to do is we need to enter short description, language, and select a system, जिस system में आपको issue हो, and just ticket raise करने के लिए we just need to provide कि क्या issue है, and then what SAP will do, SAP will create a ticket for you, and that ticket पे they will provide a resolution. उसमें थोड़ा उनको टाइम लग सकता है, it could take 3 days, 4 days, weeks as well, depending on a issue. Okay. So this portal is used to create tickets to SAP as well. ठीक है? Clear है support portal की कोई question? No, I'm good. Now let's go to another portal, which is SAP HCM Clouds Ops. SAP HCM Cloud Ops portal is used to get access to client provisioning system. जब भी कोई क्लाइंट SuccessFactors प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको प्रोविजनिंग सिस्टम का एक्सेस मिलता है, ठीक है, लेकिन बीइंग अ कंसल्टेंट वी आल्सो नीड द प्रोविजनिंग सिस्टम एक्सेस. ठीक है, प्रोविजनिंग सिस्टम होता क्या है? तो बेसिकली SuccessFactors के अंदर दो सिस्टम का एक्सेस आप मिलता है. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करोगे यू विल गेट एक्सेस टू टू सिस्टम्स. वन इज कॉल्ड योर प्रोविजनिंग सिस्टम and another is called your instance. Okay, provisioning is a back-end system and instance is a front-end system. ठीक है, provisioning में केवल certified consultants can log in. ठीक है, only certified consultants can access provisioning. Instance can be accessed by employees. कौन से employee? जो आपका client है, suppose client है आपका ABC. ABC कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, 5,000, 10,000, 20,000, वो सब एम्प्लॉयज कैन एक्सेस इंस्टांस सिस्टम. ठीक है, एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं, मैनेजर्स एक्सेस कर सकते हैं, एचआर एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग कंसल्टेंट्स कैन आल्सो एक्सेस दिस. ठीक है, सो बेसिकली इफ आई डिवाइड कि कितनी कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोविजनिंग से करनी होती है, कितनी इंस्टांस से, so 5 to 10% of configuration is done from provisioning, and then आपका 95 to 90% of the configuration is done from instance in implementation projects. ठीक है, that is why provisioning is used. provisioning में ऐसा क्या होता है जो 5 से 10% हमें काम करना होता है? provisioning is basically your backend. यहां से we enable disable modules. जो आपके मॉड्यूल्स हैं, कॉम्पोजिशन, ईसी, रिक्रूटिंग, इन मॉड्यूल्स की जो सेटिंग्स हैं, इनको इनेबल या डिसेबल वी कैन डू ओनली फ्रॉम प्रोविजनिंग. ठीक है, इसके अलावा वी कैन क्रिएट सुपर एडमिन अकाउंट्स. सुपर एडमिन अकाउंट्स मींस अकाउंट्स फॉर कंसल्टेंट्स, फॉर अस टू डू कॉन्फ़िगरेशन इन इंस्टेंस. तो अकाउंट कहां पे क्रिएट होगा? प्रोविजनिंग के अंदर. ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बैकएंड की जॉब्स हैं उनको वी कैन मॉनिटर, वी कैन शेड्यूल एंड वी कैन मॉनिटर दोज. ठीक है, ये सारा काम प्रोविजनिंग से होता है. ये जो बैकएंड जॉब्स हैं, ये अभी कुछ टाइम पहले इसको अब इंस्टांस में मूव कर दिया गया है. नाउ वी कैन मॉनिटर बैकएंड जॉब्स फ्रॉम इंस्टांस, बट क्रिएट आपको अभी भी प्रोविजनिंग में ही करनी पड़ेगी. अगर कोई नई बैकएंड जॉब बनानी है तो प्रोविजनिंग के अंदर जाके ही बनती है. मॉनिटर आप इंस्टांस से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन हमें दिख रही है, दिस इज योर इंस्टांस. ठीक है, प्रोविजनिंग की स्क्रीन अलग होती है. जो मॉड्यूल इनेबल डिसेबल होता है उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो केवल सर्टिफाइड लोगों को ही मिलता है. बट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ प्रिंट ऑफ दोज provisioning pages. So this is how provisioning screen look like.
ठीक है, ये But पूरा if पेज इट हैज ऑल दी certified consultant wants to give us the access, they can give, right? With user ID. हाँ वो आईडी दे सकते हैं, मतलब आईडी दे सकते हैं, आईडी Okay. देने वाला काम तो चलेगा ही, वो तो चलता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल सेटिंग्स। अब यहाँ पे क्या है कि खाली ईसी की सेटिंग्स नहीं है। इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी सक्सेशन मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल, competencies are used in recruiting, and then plan template is different, recruiting की settings अलग है। So हर मॉड्यूल की सेटिंग्स अवेलेबल होती है प्रोविजनिंग के अंदर। ठीक है, सेकेंड स्क्रीनशॉट इज दिस। तो इसके अंदर लेट्स से इफ आई वांट टू इनेबल एम्प्लॉय सेंट्रल, तो एम्प्लॉय सेंट्रल को इनेबल करने के लिए जो जो सेटिंग्स चाहिए यू कैन सर्च दैट देयर। इफ आई सर्च एम्प्लॉय सेंट्रल हियर, एम्प्लॉय यू सी जितनी भी हाइलाइटेड सेटिंग्स हैं, these all are employee center related settings which needs to be enabled। ठीक है, तो ये Mhm. प्रोविजनिंग में जाके, प्रोविजनिंग में केवल एक ही सेटिंग मिलेगी आपको इनेबल डिसेबल करने की, यानी चेक अनचेक। बाकी यहाँ कोई ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन कोडिंग कुछ नहीं है, ओनली इनेबल एंड डिसेबल फॉर ऑल दी मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल की सेटिंग्स मिलेगी। If I will not activate from here, then it will not be visible in instance, right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो प्रोविजनिंग का काम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग के 2-3 दिन का होता है बस। फिर उसके बाद हम Okay. प्रोविजनिंग में लॉगिन नहीं करते, क्योंकि Okay. सेटिंग इनेबल कर दी, काम खत्म। बाकी काम Mhm. आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, सारा इंस्टांस के अंदर से। Okay. ठीक है, दैट इज वाई प्रोविजनिंग इज इम्पोर्टेंट इन इनिशियल स्टेज। और इस प्रोविजनिंग का एक्सेस के लिए वी हैव टू गो टू दिस पोर्टल विच इज SAP HCM Cloud Ops। So if I open this portal here, इसका नाम अभी चेंज होके HXM हो गया है, इट इज कॉल्ड HXM Cloud Ops। HXM Cloud Ops, if I open this, यहाँ पे भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसी SID SAP ID से। एंड देन यहाँ पे गो टू ऑपरेशंस, रिक्वेस्ट फॉर्म, एंड देन यहाँ पे आपको ये पहला ऑप्शन दिखेगा कस्टमर इंस्टेंस एक्सेस रिक्वेस्ट। इस पे हमें क्लिक करके वी नीड टू रिक्वेस्ट, वी नीड टू रेज द रिक्वेस्ट बेसिक, कि कस्टमर का नाम क्या है, क्योंकि कस्टमर के प्रोविजनिंग सिस्टम का एक्सेस ले रहे हैं हम लोग, हमारा कोई अपना प्रोविजनिंग का सिस्टम नहीं है। कस्टमर परचेज सक्सेसफैक्टर प्रोडक्ट, तो उसको प्रोविजनिंग सिस्टम मिलता है। सो वी नीड कस्टमर नेम, कंपनी आईडी। हर इंस्टांस की अलग अलग कंपनी आईडी होती है। ये क्या होती है हम लोग आगे चल के देखेंगे। डेटा सेंटर किस लोकेशन में है, यहाँ पे क्या है आप लोगों सक्सेस फैक्टर के बहुत सारे वो है डेटा सेंटर्स हैं अलग अलग लोकेशन में वर्ल्ड में, रियाद, दुबई। तो इनमें से कौन सा वाला डेटा सेंटर हमारे क्लाइंट का है, वो क्लाइंट ही हमें बताता है, एंड दैट वी नीड टू सेलेक्ट हियर। ठीक है, Client have multiple कंपनी data अप्रूवर center है, then. सॉरी, I said if client have multiple data center then. मल्टीपल डेटा सेंटर नहीं होंगे क्लाइंट के, एक ही डेटा सेंटर रहेगा, मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं उसके। ठीक है, डेटा Okay. सेंटर एक ही हो, या तो उसके डेटा सेंटर US में रहेगा, या यूरोपियन में रहेगा, या अपने एशिया में रहेगा, मल्टीपल डेटा सेंटर नहीं होंगे। ठीक है, Okay. कंपनी अप्रूवर ईमेल एड्रेस, मतलब आपको यहाँ पे जो क्लाइंट है उसका अप्रूव ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, सो दैट दिस रिक्वेस्ट कैन बी अप्रूव्ड। एंड देन आप किस मॉड्यूल में सर्टिफाइड हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन सबमिट योर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये Then we इसलिए will get the ID प्रोविजनिंग के लिए for. आपको ये सर्टिफिकेशन, Then maybe in this, after submitting this, we will get the ID for provisioning or instance. यू विल गेट आईडी फॉर प्रोविजनिंग। ठीक है, Okay. आपको इस रिक्वेस्ट से प्रोविजनिंग का एक्सेस मिलेगा, और जब आपको प्रोविजनिंग का एक्सेस मिल जाएगा देन यू कैन क्रिएट सुपर एडमिन अकाउंट फ्रॉम प्रोविजनिंग। सुपर Hmm. एडमिन अकाउंट इंस्टांस में लॉगिन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तो आपके लिए भी मैं इसी तरीके का अकाउंट बनाऊंगा एंड देन यू कैन लॉग इन इनटू इंस्टेंस एंड डू वर्क। ओके। ठीक है। तो किसी प्रोजेक्ट में जैसे कोई सर्टिफाइड नहीं होता तो जो टीम लीड है दे क्रिएट सुपर एडमिन अकाउंट फॉर हिज टीम and then you can log in and start working in instance. Can we create multiple super admin? Yes, we can. Yeah. Email ID यूनिक होनी चाहिए सब। Okay. All right. So this was about SAP portals. Now we will go into system and we will see how we can hire an employee in the system. अब ये काम करते हैं. Session is going to end in 2 minutes. Just join back in 10 minutes. ये Zoom पे ना there is a limit of 40 minutes only. तो 40 minutes के बाद 10 मिनट के लिए it get freezed. ये मेरे Zoom में लिमिट है ऐसा. So shall And I stop the recording? it will automatically stop. मतलब once I end session, it will automatically stop. और ये आपका क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स में जूम नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो जब भी आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो डॉक्यूमेंट्स में जूम फोल्डर के अंदर डेट वाइज ऑलरेडी फोल्डर बन जाएगा। It will come on desktop or somewhere else? डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर Okay. माय डॉक्यूमेंट्स Got it. माय डॉक्यूमेंट्स एंड देन जूम फोल्डर बन जाएगा। अभी प्रोसेसिंग चलेगी आई गेस थोड़ी सी आपकी, उसके बाद हो जाएगा। Okay. So just join back in 10 minutes. Okay. Yeah, sure. All right.